explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number one of grammar, and the name of the chapter is The Sentences, right? So, इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं sentences के बारे में, right? So, let's see what are the sentences and how we can identify them. So the sentences are meaningful combinations of words that contain subject and predicate and make a complete sense. Right? तो सेंटेंस जो है वो एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का, राइट? उसमें बहुत सारे वर्ड एक साथ जॉइन किए जाते हैं जिसमें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होते हैं उन और वो एक कंप्लीट सेंस बनाए, यानी कि उनका कोई मीनिंग निकलना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव काइंड ऑफ सेंटेंसेस. अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, राइट? सो द वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज द सिंपल सेंटेंस. So they say a simple sentence is made up of one complete subject and one complete predicate. So ये जो सिंपल सेंटेंस है ये बनाए जाते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट और एक कंप्लीट प्रेडिकेट के साथ, राइट? इसमें ये दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट होती है. और नाउ दे सेइंग दैट देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. तो टोटल ये सिंपल सेंटेंसेस में 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. दे आर डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, questions or interrogative sentences, imperative sentence or commands, exclamatory sentences, and the octative sentences, right? So सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है वो है declarative and assertive sentences, right? So ये हमें बताते हैं कि declarative statement is a simple sentence that expresses a positive or negative action, fact or happening, right? तो ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं ये एक सिंपल सेंटेंस है जो हमें एक्सप्रेस करता है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्शंस को, फैक्ट्स को या फिर हैपनिंग्स को, राइट? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो अब जल्दी से ये सेंटेंसेस पढ़ते हैं. सो दे से द सन राइजेस इन द ईस्ट, द मून इज राउंड, lion eats flesh, right? And the next is the police did not arrest the next thing that we have is change of positive statements into negative statements. अब हम कैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को नेगेटिव स्टेटमेंट्स में चेंज कर सकते हैं, राइट? So they say we can change an affirmative sentence into negative sentence by using not after the special verbs. That means helping verbs or the model auxiliaries, right? तो हम चेंज कर सकते हैं affirmative sentences को negative sentences में use by using a single word जो कि है not, right? After the special verbs, पर सिर्फ special verbs के बाद, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स है, मॉडल ऑक्सिलरीज है, वो सब, राइट? नाउ आफ्टर दैट वी हैव द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, नेगेटिव स्टेटमेंट्स, राइट? जैसे he has a cow, negative becomes he has no cow. She can swim, she cannot swim. We have shoes, we have no shoes. Rohit was happy, Rohit was not happy. They were ill, they were not ill. I shall help you, I shall not help
You. Correct? Now, let's move ahead. We have a lot more sentences. Let's read them very quickly. We live in the city. We do not live in the city. You should work hard. You should not work hard. She took tea. She did not take tea. He works in a bank. He does not works. He does not work in a bank. Right? Next, we have the questions और interrogative sentences. तो अब ये questions या फिर interrogative sentences क्या है? Let's see. Read the following sentences. तो अब जल्दी से यहाँ पर जो sentences दिए गए हैं उन्हें पढ़ लेते हैं. They say, are you an idiot? Do you go to the gym? Where do you live? What is your name? It is very hot today, isn't it? It is very hot today, is it? Right? So they say each of these is a simple sentence. कि ये सभी जो यहाँ पर present है ये simple sentence है. It asks a question और interrogatives about something. कि ये हमसे question पूछ रहे हैं किसी न किसी चीज़ के बारे में. So, such sentences are called questions और interrogative sentences. तो इसी तरीके के sentences को कहा जाता है questions या फिर interrogative sentences. Right? An interrogative sentence is a simple sentence that asks a question about something. राइट तो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो एक सिंपल सेंटेंस है जो कि एक क्वेश्चन पूछता है किसी चीज के बारे में. नाउ वी हैव चेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस. तो अब हम कैसे असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं. राइट We can change an assertive sentence into an interrogative sentence by placing the special verb at the beginning of the sentence. Right? तो हम लोग इन assertive sentences को interrogatives में change कर सकते हैं कैसे? By placing the special verb at the beginning of the sentence. कि हम sentence के beginning में ही एक special verb को लगा. In the examples that's given, so here we have the positive or assertive sentence. Here we have the interrogative sentences. Let's read them. So they say he is absent. It becomes is he absent? I am right. Am I right? Right? तो आप देख सकते हैं कैसे हमने जो स्पेशल वर्ब्स यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब्स थी उनको सेंटेंस के बिगिनिंग में लगा दिया और एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगाकर उन्हें क्वेश्चंस में चेंज कर दिया. Right? You are a student. Are you a student? She was sleeping. Was she sleeping? Why they were crying? Were they crying? And so on, right? These are the examples. We have the imperative sentences or the commands, right? अभी imperative sentences और commands क्या है? Let's see. Read the following sentences. अब यहाँ पर हमें कुछ sentences दिए हुए हैं जल्दी से इन्हें पढ़ते हैं. Always speak the truth. So this is an advice. Please help him. This is a request. Stand up on the table. This is an order. Attack the enemy. This is a command. Do not beat about the bush. This is prohibition. Beware of pickpockets. This is warning. Engage a tutor for your sister.
This is a suggestion. Let us go out for a morning walk. This is a proposal, right? So, a sentence that expresses advice, request, command, order, prohibition, warning, suggestion, or proposal is called an imperative sentence, right? तो ये sentence जो कि किसी एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, प्रोहिबिशन, वार्निंग या सजेशन कुछ भी बता रहा होता है, उन्हें कहा जाता है द imperative sentences, right? Next, we have the exclamatory sentences. अब ये exclamatory sentences क्या है? Let's read and find out. Exclamatory sentences are those which express strong or sudden feelings or emotions of joy, wonder, anger, sorrow, contempt, etc. Right? तो ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है ये यूज़ की जाती है ताकि हम एक्सप्रेस कर सके अपने स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स इमोशंस को, राइट? जैसे कि हैप्पीनेस, एंगर, सॉरो, हंगर, राइट, मेनी मोर. So such sentence usually begin with how or what and ends in an interjection. कि ये जो sentences है ये usually हाउ या फिर व्हाट से शुरू किए जाते हैं और एक इंटरजेक्शन से खत्म किए जाते हैं, राइट? जस्ट लाइक एग्जांपल्स वी हैव ra, I have passed. How wise Pushpinder is. Wonder. Shut up, your wretch. Anger. Alas, I have failed. Sorrow. Disha, what a dirty fellow. Contempt. Hello, how goes the world? Greeting. What charming looks. Surprise. Bravo, you have won the war. This is praising, right? Next thing that we have over here is change of assertive sentence into an exclamatory sentence, right? तो अब कैसे assertive sentence को एक exclamatory sentence में convert किया जा सकता है, right? So let's see. We can change an assertive sentence into an exclamatory sentence by using how or what at the beginning of the sentence, right? So हम assertive sentence को कैसे एक exclamatory sentence में change कर सकते हैं? We all know that by using how या फिर what big sentence के शुरुआत में लगाकर, राइट? जैसे कि हाउ इज फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव. अब ये जो हाउ है ये हम एक एडजेक्टिव के साथ ही यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक सॉरी. एंड आफ्टर दैट एडजेक्टिव जो है वो एक नाउन के साथ ही फॉलो किया जा सकता है, राइट? सो हियर दे से we have the assertive and the exclamatory sentence as well. They say he looks happy, and it is how happy he looks. You are a great fool. What a fool you are. The weather is nice. How nice weather is. That is a lovely doll. How lovely the doll is. Right? Now they say if an exclamatory sentence begins with oh, oh, oh that if only with that we wish in an assertive sentence, right? कि हम उन चीजों को assertive sentence में एक wish की तरह यूज करते हैं, right? Just like oh that I were a bird. और assertive में जाते ही हो जाता है I wish I were a bird, right? Oh that I were safe at home. I wish I were safe at home.
If I were a millionaire, I wish I were a millionaire. Would that I were a fairy. I wish I were a fairy. Right? Next, it is joyful in place of hurrah and bravo, and it is sad in place of alas. To make assertive sentences as, right? कि बहुत अच्छा है अगर हम हुर्रा यूज करते हैं और ब्रावो यूज करते हैं, और इट इज सैड इन प्लेस ऑफ अल्लास कि अल्लास के लाइक अगर हमें सैडनेस शो करनी है तो हम अल्लास यूज करते हैं टू मेक assertive sentences जब हम assertive sentences बनाते हैं. So the exclamatory is hurrah, we have won the match. It is joyful that we have won the match. Bravo, well done. It is joyful that you have done well. Alas, he died so young. It is sad that he died so young. Correct? Now, moving ahead, the next ones we have optative sentences. अब ये optative sentences क्या है? Let us know. So they say read the following sentences. जल्दी से इन sentences को पढ़ते हैं और फिर पता लगाते हैं कि optative sentences आखिर क्या है. So, may God bless you. This is a blessing. Oh, that I were a prince. This is a wish. May that be as you wish it to be. This is a boon, यानी कि एक वरदान. May God's curse befall you. This is a curse, यानी कि श्राप देना, right? So, each of these is a simple sentence that states a blessing, a wish, a boon, or a curse. Such sentences are called optative sentences, right? कि ये जो sentences है ये सभी simple sentence में state करते हैं blessing, wish, boon या फिर curse. और इन sentences को हम optative sentences कहते हैं, right? An optative sentence is a simple sentence that states a blessing, wish, boon or a curse. Optative sentences में ये सभी feelings हम अपनी express करते हैं. Change of optative sentences into assertive. अब हम कैसे optative sentences को assertive में change कर सकते हैं? So optative and assertive here. Optative, oh, for a cup of tea. I long for a cup of tea. If I could win the first prize, I strongly desire to win the first prize. Right? Next, we have phrases and clauses. अब ये phrases और clauses क्या है? Let's see. So first of all, they have explained what is a phrase. A phrase is a group of words that make sense but not complete sense. It doesn't have any subject or predicate. तो एक ऐसा group of words जो कि एक sense तो बनाता हो पर कहीं ना कहीं उसका जो sense है वो incomplete हो, तो वो कहलाता है एक phrase. Right? It doesn't have any subject or predicate. कि phrase में कोई भी subject या फिर predicate present नहीं होता है. Examples: we will go tomorrow. He sat in the first row. Right? So, in each of the above sentences, the word in italics have a meaning. राइट कि सारे ही इन ये जो दो ऊपर सेंटेंसेस है यहाँ पर जो कलर्ड वर्ड्स है इनका मीनिंग तो है, राइट, बट नॉट अ कंप्लीट मीनिंग. पर अगर इन्हें हम अकेले देखें तो इनका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है, दे आर इनकम्प्लीट. सो दे आर फ्रेजेस, इसीलिए ये फ्रेजेस कहलाते हैं. अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन. अब एक क्लॉज जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है ऑफ इट्स ओन, यानी अपने आप का. इट कैन बी अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस.
और ये एक सेंटेंस का पार्ट भी बन सकता है, राइट? एग्जाम्पल्स, I told you that she is a loser. Call the boy whose mother teaches in this school. Correct? So the group of words in italics in those two sentences are more complete than a phrase. Yet, each group needs another clause, that is, I told you in the first sentence and call the boy in the second sentence to make a complete sentence. Right? Next, now we are going to study about the kinds of clauses. So let's see kinds of clauses कौन से होते हैं. So there are two kinds of clauses, that are principal and the subordinate clauses. So अब बात करते हैं principal और subordinate clause की, right? So they say the principal clause or main clause and the subordinate clause are the two components of a complex sentence. तो ये जो प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज है, ये एक्चुअली सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, राइट? ये दो कंपोनेंट्स है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के. एग्जाम्पल्स, शी डजंट नो वेयर ही लिव्स. सो ये जो शी डजंट नो है, ये है एक प्रिंसिपल या फिर मेन क्लॉज. और वेयर ही लिव्स, ये है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट? नेक्स्ट, you may choose whatever sports you like. So यहाँ पर you may choose is a principal or main clause, or whatever the sports you like is the subordinate clause, right? Next, let's see about the kinds of phrases. तो अब phrases के kinds के बारे में पढ़ते हैं. So they say that there are three kinds of phrases. Total तीन तरीके के phrases होते हैं. The first one is the noun phrase. अब ये noun phrase क्या है? A noun phrase acts like a noun. कि जो noun phrase है ये act करता है बिल्कुल एक noun की तरह. It is an answer to the question of what. ये हमें आंसर करता है अगर हम पूछे what यानी कि क्या, राइट? सो एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी. अगर पूछा जाए what do you want to watch, so that means the answer would be I want to watch a movie, right? Next, we have the adjective phrase, जो कि बताता है an adjective phrase acts like an adjective. एक adjective phrase हमेशा एक adjective की तरह ही काम करता है. Example, this is a book of great value, right? Next is the adverb phrase. An adverb phrase performs the function of an adverb, right? Example, he spoke to them hastily. We have the topic which is framing questions. अब they are telling us कि हम questions को कैसे frame कर सकते हैं. What, why, where, when, who and which are commonly used question words, right? कि ये जो सभी वर्ड्स हैं ये हम यूजुअली क्वेश्चन बनाने के लिए यूज करते हैं. दे आर यूजुअली प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. ये सेंटेंसेस यूजुअली सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज किए जाते हैं. एग्जाम्पल्स, व्हाट वाज ही डूइंग, why has he left, where is your father, right? Next, when did he return, who opened the door, which dress did you wear, right? Now next is how is also a question word. It can be used to refer in what manner or way. कि how जो है वो भी एक question word ही है और ये इन सभी तरीकों में यूज किया जा सकता है. जैसे कि to refer in what manner और way, यानी कि अगर पूछना हो कि कोई काम किस तरीके से हुआ तब हम how का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, how do you make a sandwich,
How does he know the answer? Correct? Next, with adjectives. अब बात हो रही है adjectives की. So the examples are, how tall is he? How old is her house? Right? Next, with much or many to refer to quantity or price. Right? कि हम much और many को यूज करके कैसे रेफर कर सकते हैं क्वांटिटी या फिर प्राइस को. So examples, how much time do you have to finish the test? जब हमें टाइम के बारे में पूछना हो, किसी चीज की क्वांटिटी, उसका प्राइस पूछना हो, तब हम how का यूज करते हैं. How many people live in this village? Right? Next, to refer to adverbs and frequency. अगर हमें adverbs और frequencies को रेफर करना हो तब भी हम how का यूज करते हैं. जैसे कि examples, how quickly can she solve these sums? After that, how often do you visit your parents? Right? Next, to ask about one's condition. अगर हमें किसी की condition के बारे में पूछना है, उसकी तबीयत, right? What is he feeling right now? So it's like, how are you? Or how is he feeling now? Right? Next. Now they are telling us the framing question tags, that how can we frame the question tags. So they say a question tag is a short question added to the end of a statement. Right? कि क्वेश्चन टैग एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो कि स्टेटमेंट के एंड में ऐड किया जाता है. It is meant to seek the confirmation of what the statement says. कि इसका मतलब यही होता है कि हम कंफर्मेशन ले रहे हैं, राइट, कि स्टेटमेंट आखिर कहना क्या चाहती है. एग्जाम्पल्स, यू आर टायर्ड, आरंट यू. कि आपने पहले कोई चीज कही और उसके बाद आपको उसका कंफर्मेशन लेना है कि क्या मैं सही कह रही हूँ या फिर नहीं. राइट? She did not come, did she? Your father is a doctor, isn't he? It is a good movie, isn't it? So, that was all about the chapter. I hope you all are clear with this and you all got the information really well, right? So, that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.